Hello, welcome, namaste, welcome to our channel, Football Fantasy, and कितना कुछ है आज बात करने के लिए. So much to talk about, and it's going to be exciting. Fun होने वाला है आज और मेरे साथ मेरे दो बेहतरीन दोस्त प्रशांत और नगरीन. Welcome to the channel, guys. कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत सही बढ़िया है। कभी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एकदम एकदम फैंटास्टिक फैंटास्टिक. तो कुछ ही देर में हमें हाफ डेढ़ घंटे में यूएफा सुपर कप शुरू होने वाला है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट. चैंपियंस लीग विनर वर्सेस यूरोपा लीग विनर. सो फैंटास्टिक गेम होने वाला है ये. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट विल बी अ वन साइड गेम. तो लगता है लोगों को कि रियल मैड्रिड जीत जाएगी, बट इट्स नॉट ऑल दैट इजी. बारसा फ्रेंड इज हियर. He can explain you all about how Eintracht Frankfurt are. They had a very bad experience. Barcelona was looking Yes. favorites to win the Europa League, but then Frankfurt ने उनको डीरेल कर दिया. तो यार पहले ट्रांसफर की तो बहुत बातें करने के लिए आज डी फ्रैंकी डियोंग, मिलिनकोविच साविच, कोडी, गैप्को, बर्नार्डो सिल्वा, एड्रियन रैबियो, सो मच टू टॉक अबाउट. बट पहले हम फटाफट सुपर कप गेम के बारे में बात करते हैं. तो रियल मैड्रिड वर्सेस आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट. आई थिंक आधे घंटे में लाइनअप भी आ जाएगा. तो सबसे पहले अग्रीम भाई, क्या आई मीन यू वॉच आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट अगेंस्ट बार्सिलोना. तो क्या लगता है आपको, हाउ डू दे अप्रोच देयर गेम? आई हर्ड कि उनका प्रेसिंग बहुत ही फैंटास्टिक होता है. ऑफ द बॉल वो लोग की वॉक रेट बहुत ही जबरदस्त होती है. तो क्या और क्या जानते हो आप फ्रैंकफर्ट के बारे में? I think the main thing about Eintracht Frankfurt is like what Barcelona made mistakes, and I think where Real Madrid wouldn't make mistakes is the midfield. Midfield wouldn't basically switch off because Real का जो midfield है with like Modric, Casemiro, and probably what's his name? क्या नाम है? Kamavinga क्रॉस। और टोनी क्रूज, Cruz. कामाविंगा. टोनी क्रॉस। Hmm. Hmm. So these guys are basically game changers. And when it came to Barcelona, Barcelona literally like switched off when they conceded like three goals in like 30 minutes. I think 60 minutes. And last में जाके दो गोल हो गए थे. But Real is a very good team when it comes to like pressing. Uh, what do you call their opponent? अगेंस्ट बहुत प्रेसिंग ही ना, सही खेला है. प्रेसिंग को. Yes. हाँ, प्रेसिंग रेजिस्टेंट अच्छे से है बिकॉज उनके प्लेयर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है इन टर्म. Yes. कैसिमिरो, मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज. बट तीनों के तीनों यंग प्लेयर्स नहीं है. आई नो कैसिमिरो तक 30 कुछ रहेंगे, बट आई क्रूज और Hmm. मॉड्रिच दे आर इन देयर Hmm. लेट लेट मिड था। 30s. तो Yes. yeah, I know. So Chomini is there, Kamavinga is Yes. there. So those fantastic talent है. And I really love Kamavinga. When Kamavinga is one of my Yes. favorite midfielders. The way वो पीछे से कंट्रोल करते हैं बॉल को और डिक्टेट करते हैं, तो वो फैंटास्टिक है कामाविंगा. तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. बट थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, इमेच्योरिटी है. वी सी लास्ट सीजन कामाविंगा कुछ रैश टैकलिंग करते हैं. डिफेंसिवली Hmm. वो कहते हैं कि वो सीडीएम है, but at times defensively he makes a lot of mistakes. He goes in very hard and concedes fouls. So Hmm. against a counter pressing team, wouldn't be wise to start Kamavinga or Chomini for that matter. कुछ Chomini का भी start जो हुआ रियल मैड्रिड को प्री सीजन में इतना कन्विंसिंग नहीं लगा. He's not even looking Hmm. 10% of the player he was at Monaco, and then even for Yes. France whenever he played. तो है ब्रिलियंट टैलेंट है, बट आई थिंक ये दोनों प्लेयर फ्यूचर के लिए है. तो Hmm. क्या प्रॉब्लम विद कैसेमीरो, क्रूज एंड मॉड्रिच है कि वो 90 मिनट्स लास्ट नहीं कर पाएंगे. Neither three of Hmm. them can last 90 minutes, especially Modric and Cruz. 60, 65 minutes. But then they will need the energy of Camavinga and Chomini. चुआमेनी। तो लेकिन हम्म। Chomini, yes, Chomini, Aurelien Chomini. But I think that Frankfurt को लोग underdog समझते हैं. The way they won the Europa League, the Yes. team that they have, young players, hungry players. और जर्मनी की टीम तो पता ही है कैसे होते हैं ना, प्रेसिंग में उनको कोई बीट ही नहीं कर पाता. Hmm. फैंटास्टिक टीम, उनका कोच भी फैंटास्टिक है. तो डू यू गिव एनी चांस टू आइडेंटिफाई फ्रैंकफर्ट टुडे? I think मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए. I think like only Real को problem तभी पड़ सकता है if their defense switches off because you have seen how Real का defense is. They're not up to the mark. But with Rudiger, I have to see how he's going to perform with that. What's his name? क्या है इसका? Militao. Militao के साथ how does he was with that coordination cooperation.
एंड देखना पड़ेगा बिकॉज अगर उन लोगों ने कहीं से भी पेनिट्रेट कर लिया ना फ्रॉम देयर विंग बैक्स देन इट विल cause a huge problem. They have three top center backs: Militao, Yes. the Chelsea defender, Rudiger, and of course David Alaba. So I would rather prefer David Uh, Alaba and Rudiger as centre back because you know Militao is slightly rash. Pressing के against hmm. इतने वो quick नहीं है. So let's see Yes. if they can who starts. And I think Phil and Mendy is a fantastic left back. They don't need to switch Alaba Hmm. to the left back. बहुत ही Yeah. उनका जो डिफेंडिंग और अटैकिंग बहुत ही बैलेंस्ड है. He's not someone who leaves Hmm. spaces behind. He can track back. So fantastic player है Phil and Mendy. Hmm. तो आई थिंक डिफेंस में तो उनका सॉर्टेड है. स्ट्राइकर तो ऑफकोर्स बेंजीमा है ही. और विनीशियस एंड आई थिंक the what they will start on the wings. Venkatesh says Hmm. slight lag. Yes, Venkatesh, I've just fixed it. And let me know if the lag is still there. I still Frankie De And is Jong. there I still feel Frankie De Jong won't join Chelsea. Yes, yes, we are going to talk Hmm. about that. Reality क्या है, ground reality उसके बारे में. And also saw the footage where Barca fans verbally abused Frankie De Jong, asking him to uh, reduce his wages before reaching the yeah, training ground. This is disheartening to see. Feel bad for Frankie. Yes, we all feel bad for any player, for that matter. किसी fan Yeah. जिसकी abuse करे, to reduce salary to what he actually agreed with the club. That's not right. So yeah, quickly before we switch on to exactly. the uh, uh, Yeah, let me just transfer updates. chime in. Yeah, let me just chime in about the Super Cup from my end. That Mm, like you agree made a very good point here that like Ancelotti and Real Madrid they have they know how to play against high pressing teams or gegen pressing teams. So that is something that I would just like to second because Ancelotti is someone who he has well rather unsuccessfully managed in Germany firstly, and secondly he even when like in his previous stint with Real Madrid he has come across a lot of teams, a lot of German teams who have been playing such a high pressing game. Even Liverpool, whom they have now famously beaten twice, right? So even Liverpool were a high pressing team. So they have a method. I mean, they are aware of how to not exactly nullify, but manage such teams Yeah. where they can basically like they most of the times what I've seen is that they go and hit them on counters, but they don't let that press get become too lethal. So I would still say that Real Madrid would be the favorite for it. Yeah. And Divya, just yeah, I just absolutely. want to Remember our mention one favorites. more point. Yeah. Yeah, please go ahead. Bolo, bolo. I just like I think before even the match, yeah, yeah, before this match, I think Frankfurt lost 6-1 to Bayern as well. That's a Uh, big Yeah, I know, I know, I know. advantage for Real also to understand the tactical analysis, how they can penetrate and attack yeah. Frankfurt. Yes. Yeah, yeah, Agree. absolutely. Bayern, Bayern, a classy team, fantastic team, and I think Real equally are. But I think Yes. Eintracht Frankfurt will put up fight. Although Real will win, my student prediction is Mm. 3-1 to Real Madrid, and it will be an easy win. Although we will see some resistance from Eintracht Frankfurt, but I think 3-1 Mm. is the final score. Before I move on to transfer, guys, your school and predictions, Prashant. Yeah, I think it would be something like 3-0 to Real Madrid. Pretty comfortable. Don't see too many problems for them. What about you, Agrim Agree? bhai? I'll I'll go for 2-1 Real Madrid. Yeah, yeah. So we all are in favor of Real Madrid, yeah. And it's not just because Yeah, we're yeah. favoring them, but they are a very good team, Champions League winner Mm. for a reason, and Yes. fantastic side. So I think Ancelotti will come out on top. Moving on to our transfer updates. Now first of all, I would like to talk about Adrian Rabiot. After United lost to Brighton within 24 hours, what news broke out? अरे बाप रे, क्या Yeah. न्यूज ब्रेकआउट So की थी? I would like एड्रियन to राबियो, I would like to मार्क, say something here. Yeah, Divya. I बोलो mean, बोलो you may बोलो बोलो. recollect this is something which we discussed like during the watch along. Uस time पे this is something which we predicted, right? We mentioned this specifically. Okay, अभी Brighton हारा है and United will go into panic mode and they will sign random players like whoever they can sign, right? And within 24 hours, he got this update that Adrian Rabiot is almost a done deal. And now, Mm. additionally, they are also claiming that they have been in touch with him since the transfer window began.
which is like such rubbish. So yeah, अपना prediction सच हुआ. Hmm. वेंकटेश स्कोर प्रेडिक्शन इज 6-1. वाह 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 वाह. हो सकता है Oh, ऑफकोर्स. I अगर know. बायर्न स्मैश कर सकती 6-1 तो ऑफकोर्स रियल भी स्मैश कर सकती है. Could So be. let's wait and Hmm. watch on that. Now, yeah, like I was saying, Adrian Rabiot and the worst of worst, Marco Arnautovic. सबसे I Yeah. was disheartened and disappointed. मेरे पास, I didn't have any words. I was about to cry. यार, Marco Arnautovic, no wonder he's talented. अच्छा है, but 33 years of age, spent 3-4 years in China. And then he's coming Hmm. playing from to Bologna. He's playing in Bologna for a reason because he's an average player with all the talent, but with a poor attitude. Also, he has some racist controversies in the past. And United are a team, are a club who promotes anti-racism. They are against that. They take a stand. The social cause is brilliant. This is one thing United are very good at, and they are signing a player who is absolutely pathetic in terms of being. Forget about being a sportsman, being a human being, and after all that protest यार उसके बाद होने के बाद कि नहीं प्लेयर्स आई हर्ड इवन कुछ फैंस ने ईमेल्स लिखा रिचर्ड आर्नल्ड को कि वी आर अगेंस्ट दिस डोंट साइन हिम. तो ठीक है ये, बट ये साइन तो नहीं किए प्लेयर को एंड देयर विड्रॉन. बट ये दिखता है कितने पैनिक सिचुएशन में. प्रशांत राइटली सेड कि वो एब्सोल्युटली रबिश है कि रैबियो को पहले से स्काउट करके रखा था. If you had scouted Rabiot for so long, किस चीज के लिए वेट कर रहे थे तुम? He is not a 100 million player. 15 million का Hmm. प्लेयर यार. Exactly. तुम 15 million के Yeah. लिए इतना वेट कर रहे थे तुम. It's absolutely Ah. rubbish. These are all alternative backups, and I feel that Frankie De Jong's situation हाथ से बाहर जा रहे हैं United के. They don't know what's going to happen, so they are making those panic buys. And now, if you look at other signings linked to us, like पास्ट में जाके वो नॉस्टैल्जिया ला रहे हैं. सर्ज मिलिनकोविच सैविच, मोरिनियो का Ah. टाइम से वो बंदा लिंक्ड है. वापस तुम उसको लेके आ रहे हो. अभी मुझे लगा Ah. अभी सिर्फ वेस्ली स्नाइडर अभी वापस आ जाएगा. वेस्ली स्नाइडर की लिंक भी Ah. ऐसा कर Ah. रहे थे. Yeah, वेंकटेश से exactly. And आई वुड रादर sorry. I would rather play Ghana than signing Rabiot. His bang average for Yeah. past 2 seasons. Absolutely. You look Yeah. at his stats compared to Fred and McTominay, he's even worse than that. Yeah. I agree he's played on Yeah, the wings for exactly. Juventus, but stats अच्छे नहीं है उसके. And I हाँ, don't think he will उसके make a stats big अच्छे signing. नहीं है. Yeah, not only that. The only मतलब when I did like hear about it, my first thing was that at least he is set to be a proper CDM, but that does not mean that he's a good CDM. Abhi, the stats that you are talking about, right? So in many of the stats like interceptions, his passing, his progressive passing, all those stats are actually lower than even those of McTominay and Fred. And imagine this; these are his stats when he has played for Juventus and PSG. Imagine that kind of a player coming into the Premier League, which is like so fast compared to those leagues. How is he going Hmm. to settle? I mean, unless and until Ten Hag is like a magician and really gets the absolute best of him and transforms his game, we are just going to end up with similar players. So it's not really going to make sense. Uh, you may recall, like apparently the most famous tweet about this particular transfer has been that Rabiot will be a statement signing if that statement is we have no idea what we are doing, and that is an accurate tweet. Yeah, I mean, Adrian Rabiot, like, सबसे उनके अगेन another player with issues, attitude issues. उसकी एजेंट जो उसकी मदर है, उनका भी बहुत Mother. प्रॉब्लम्स है. Demands are very high, but the quality that you get on the pitch is not all that good. No wonder potential Hmm. है. Exactly. On his day, fantastic midfielder. He was one of the top midfielders when PSG signed him and young upcoming midfielders. But yeah, consistency without potential and talent is nothing. On the pitch to Hmm. Yeah. deliver कभी नहीं कर पाया Adrian Rabiot. I hope Ten Hag, if Ten Hag actually wants him, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा. But moving on from you know Adrian Rabiot, Venkatesh says Glazer out. Absolutely भाई, Glazer out. और लिवरपूल के सामने जो प्रोटेस्ट होने वाला है, I hope वो प्रोटेस्ट actually हो and it actually matters. Also, Rabiot's agent is similar to Raiola, it seems. She created a lot of issues Yeah. in the
with the past clubs. Absolutely, you know. Yeah, In she fact, did. club छोड़ो, Uski, यूरो के बाद she fought they with had a Pogba's fight with mother. Yes. Mbappe's parents, even Mbappe's Yes, parents. yes. They had an argument. They had an argument with them as well. So yeah, we are just basically replacing Pogba. Basically, we gave Pogba to them, and we are taking another version of Pogba. So yeah, Expensive not a Fellaini good लगता है signing. तो Fellaini है वो Fellaini expensive अरे भाई Fellaini है Correct. फेलेनी को कुछ कम मत समझो। फेलेनी ने बहुत बड़े बड़े क्रूशियल हेडर स्कोर किए थे। उसको क्रिटिसाइज हाँ किया था बट ही हैड स्कोर्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट गोल्स। बट ये फेलेनी yes इज लॉट बेटर देन फ्रेड मैकटोमिनी। फ्रेड yes मैकटोमिनी तो yeah भाई मतलब कुछ आउटपुट ही नहीं है भाई। क्या मतलब कर रहे हैं पिच पे, दे हैव नो आइडिया। Venkat, also if you're thinking for long term, then don't make such signing. Absolutely, long term है नहीं। 10 million a year wage मांग रहा है वो। You know, if you offer him a 4 year contract, end of the story. He is not going to leave. We already have issues selling players। और एक प्लेयर आ जाएगा जो डेडवुड में ऐड हो जाएगा। तो यार तुम वही hmm. गलती जो पिछले पास्ट में किया तुम वापस वही कर रहे हो। क्या मतलब बनता है? लुक एट चेल्सी, क्या एम्बिशियस ओनर है। 300 million अब स्पेंड करने के रेडी है। Fellaini is a Jose system player, big man। yeah तो yeah. गाइस मूव करते He's हैं a एड्रियन राबियो से। अब बार्सिलोना की सिचुएशन पे। तो now Barcelona are still 3 days to go and yet not registered the players. You know, it's getting closer and closer to the deadline of registering players. Hmm. And from what I read today, now I'm not sure how true is that, but it's quite shocking because it's coming from a Twitter page called Managing Barca, which is at Yes. times quite reliable. So they are saying Hmm. that if they are unable to register these players, Frank Kessie and Andres Christensen will leave the club as free agents। Wow, Hmm. that's actually shocking। नो, आई हैव नो क्लू कि ये कितना रिलायबल है और कितना सच है। बट अगर ये सच है तो ये प्रॉब्लम है बार्सिलोना के लिए। आफ्टर हैविंग सच अ वंडरफुल yeah. विंडो, ये तो बहुत शैम्बॉलिक हो जाएगा। तो अग्रिम भाई क्या लगता है हाँ आपको? विल बार्सा फाइंड अ वे आउट? कुछ ना कुछ करेगी? Hmm. It totally depends on like अभी six I think I read somewhere like Barca का कुछ like wage का जो balance sheet था they had to come out हम्म, after like 60% for each player जो I think PK was like with a salary of I think 52 million had to go for like 60% wage cut करेक्ट करेक्ट। हम्म, yes तो उसके बाद आई थिंक फ्रैंकी डियोंग का सैलरी अराउंड लाइक 32 मिलियन तो उसका 60% वेज कट के बाद है कमिंग अप टू 21 मिलियन जो उसके हाथ में हैंड होएगा आई थिंक 9 और 10 मिलियन मैक्सिमम रहेगा एनुअल ग्रॉस विच इज व्हाट आई फील बट अगर उसके बाद भी इफ ही डजंट फील लाइक टेकिंग अ वेज कट आई थिंक ही हैज टू लीव देन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। when I mean he's not ready to leave it seems, and Frankie De Jong को वेज कट लेना नहीं है। From what I believe बट is जैसे एजेंट है उसका प्रॉब्लम एजेंट आई डोंट थिंक प्लेयर का कुछ प्रॉब्लम आले रहेगा दुर्शान, आले यस दुर्शान। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक फ्रैंकी डियोंग विल बी हैप्पी टू लीव if there is a settlement on the wages that he's owned. So he's owned around यस 17 million. If Barca can find a settlement with his agent on a fixed, on a particular money that they can give him instead of 17 million, so I think then a way could be found out। तो ये एक है सिचुएशन। जो भी है बादशाह को तुरंत करना होगा 2 से 3 दिनों में। अदरवाइज उनकी यस सिचुएशन बहुत ही वर्क होती जाएगी। और वेंकटेश बोल रहा है तवा तवा बार्सिलोना का नाम क्यों लिया, पूरा मूड खराब कर दिया। एंड आई होप yeah. फ्रैंकी डियोंग डजंट लोअर हिज वेजेस एंड टीचेस देम अ नाइस लेसन। जस्ट स्टे इन बार्सा एंड डिस्ट्रॉय देयर वेज स्ट्रक्चर। फ्यूचर ट्रांसफर दे विल बी इन ट्रबल टू पे सैलरी टू अदर प्लेयर्स। अरे भाई नहीं, Yeah, ऐसा नहीं होना exactly. चाहिए। फ्रैंकी डियोंग सी, आई अंडरस्टैंड बारसा जो कर रहे हैं वो गलत कर रहा है। यू नो, नॉट गिविंग प्लेयर्स वेजेस एंड बाइंग मोर प्लेयर्स। बट यार उसका उसको वर्ल्ड कप भी खेलना है। अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा तो वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं वो। He has to be ready for एब्सोल्युटली World Cup. So yeah, I don't think it makes sensible for Barcelona to keep him. So Prashant, you were saying something. Bolo. Yeah, I was just saying that I had read a while ago. I'm not so sure about the source, but उसमें भी यही था कि Mm-hmm. मतलब वो लोग सेटलमेंट शायद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ था Mm-hmm. आई थिंक के 6 मिलियन का कुछ वो लोग उसको वेजेस दे देंगे आउट ऑफ द 17 मिलियन एंड देन Mm-hmm. दे यंग कैन लीव
And additionally, Agreem, I would like you to clarify: is this thing true that if the agents can actually leave as free agents because they have officially signed with Barca? So I don't think if they are not registered, they won't be free agents to leave. That is my understanding. Just like Or I think it has Frank a Essien and this one. Frank Essien and yeah, Christensen, you Christensen. mean? Well, I Yeah, read a report somewhere like like even after if there is a problem with signing after the deadline day. I think 31st August is also one more deadline they have said for probably to register players. But I see, mm, I think it depends on the wage cut of Sergio Busquets and this guy, what's his name, PK. You have to pay जेराट him पीके 60, या 40 million. अरे भाई ने कितने दोनों ने कितने वेज कट लिए भाई उनको तो Hmm. 36 तोपों की सलामी सच्ची में Absolutely. वेज कट पे वेज कट वेज कट पे yeah, वेज कट आई मीन इतना Hmm. क्लब आई मीन टू बी ऑनेस्ट यार सच में क्लब की लॉयल्टी इससे मालूम पड़ती है ठीक है बार्सिलोना जो किया हाँ, वो गलत किया बट फॉर देम Hmm. मोर इम्पोर्टेंट क्लब का उनको उनके लिए इम्पोर्टेंट the लापोर्टा club ये is सब नहीं bigger है than उनके लिए them. इम्पोर्टेंट क्लब का सिचुएशन है फैंस है एंड आई हाँ, रियली एडमायर दोस टू प्लेयर्स I and I mm, feel at the end of the contracts, Barcelona should pay them whatever is due. Yep. Right now they're Yes. हाँ, making exactly. adjustments, but I think that should be paid when it's done. Yes. And हाँ, also Barca one more thing scam I and just wanted to 2022. हाँ बोलो sorry. बोलो also I बोलो just ना wanted नाजिम to भाई. I don't understand. I think I had shared one information with you guys with the balance sheet, right? आपने उसमें से देखा होगा Hmm. ना? So I think there was one salary of Ansu Fati getting a salary of 13 million, which makes no sense to me. 13 million wages, which is like I think 100,000 बोनस euros रहेगा per ग्रीन month. भाई. मुझे लगता है उसका बोनस रहेगा सर्टेन No, but you're गेम्स still कंप्लीट करने paying, के बाद. no, but you're still paying a 19-year-old, like, not even how old is he? 18, right? 18 or 19. You're paying him Hmm. 100,000 euros a week, which makes no sense because Yeah, he has absolutely done nothing for the club yet. Correct, हाँ. correct. I agree. He's just a Agree prospect to at that. this stage. Yeah, Injury. He's also Yeah, injury prone. Ansu Fati. A lot of हाँ, times he's Messi was injured. So, Messi was never given a salary of 100,000 when he started off as a youngster. yeah, hmm, hmm. exactly. It is just It's that quite फातिह को questionable. अभी से वो लोग ने ऐसे like डब करके रखा है. He has been hyped up to be his replacement, right? Yeah, Yeah, जितना है. So एक बात ये भी है. I mean, you can actually give them one benefit of the doubt के अभी भी ऐसे क्लब्स है दूसरे जो उसको उठा ले, like if they don't pay them. yep. So वो एक चीज Hmm. बोल सकते हैं. But still, yeah, 100,000 is a little too high. Yeah, I would agree For a to that. 19-year-old. Okay. Yeah, exactly. Okay, Venkatesh is nothing against Barca, but the way they have handled this is symbolic in future. Acha, I think this is the same thing that we have read earlier. All right. they will lose So, reputation too, and many players will be scared to come if they can't play. I mean, yeah. I don't think that should be a problem because सैलरी इशू तो अभी भी चल रही है बट प्लेयर्स तो आ ही रहे हैं उनके पास Hmm. आई हाँ, डोंट नो ये क्या बात है प्लेयर्स में कि यार एंड ऑफ द डे उनको बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जाना ही है मतलब एट टाइम्स आई सीन लॉट ऑफ पीपल विद प्लेयर्स विद डेस्परेशन La Liga में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जाना ही है इवन दे आर प्लेइंग एट Hmm. यूनाइटेड दे आर प्लेइंग एट लिवरपूल क्लब्स लाइक यूवेंटस हाँ, टॉप क्लब्स विद गुड हिस्ट्री रेप्यूटेड हिस्ट्री Hmm. उनको दे वांट टू एंड अप एट बार्सा एंड रियल मैड्रिड लॉट ऑफ प्लेयर्स तो बार्सा का डिमांड कभी कम नहीं होगा all they have to do is resolve the financial issues and not do the Yes. stupidity what क्या नाम है उसका Bartomeu. लापोर्ता के पहले कौन था वो हाँ बार्टोमेउ Bartomeu. ने जो की है Bartomeu. वो स्टूपिडिटी नहीं Bartomeu. करनी होगी तो I think Barca will still attract players fantastic club fantastic crowd fans the stadium is beautiful तो मैन यूनाइटेड देखो ना यार यूरोपा लीग में आने के बाद भी प्लेयर्स तो अट्रैक्ट कर ही रही है ना तो यार वो तो Yes. कभी टॉप क्लब के साथ हाँ, कभी ये नहीं होगा No, हाँ, but United का then branding भी अच्छा है Divya, ना. हाँ, या यूनाइटेड का United का brand है ब्रांड ना. नेम अच्छा है. But then ये agree. The thing is Yes. कि United is still, I mean, historically, United will never be as attractive as Barca or Real. And I'll tell you why. एक तो ये चीज है कि United, like in the past 15-20 years, like it has become popular. Even Hmm. Liverpool, but Madrid and Barca have almost always been there. मतलब पता ही है, Yes. like they've always been at the top. Second thing is Hmm. even like from a अगर तुम lifestyle के हिसाब से देखो, Spain has warmer and better weather.
matlab, Yes. it's not Hmm. something which we talk about, but as a player, people think about it because Manchester में आधे से ज्यादा player लोग यही weather के हिसाब से नहीं आते. It is well known, right? Yes. So that is Yeah. also a thing. Yeah. Hmm. So okay. This is Onom Lori Godwin. Lori. Economy, we already Godwin. Hi, hi. Yeah. Hi Hi there. Godwin. Venkatesh So says apparently Rafinha has a clause where his wages will increase after 2 years. Interesting. हाँ कैथरीन भाई ऐसा Hmm. कुछ clause है? I have not read something like this, तो so Rafinha is can't very young, comment. अच्छा player है. Yeah, Fantastic he's signing, मुझे तो 25. बहुत सही लगता है Rafinha. Yes. Yeah. 25 and a traditional winger है मतलब dribble करता है cross भी डालता है. You see a lot of wingers these हाँ days, you're dribbling Hmm. and cutting and taking a shot, not able Yes. to cross yeah that well. Rafinha does that हाँ brilliantly. He can shoot, he can cross, fantastic player. And the best part about Absolutely. Rafinha is he will track back. He tracks back to help out the right Yes. back. तो yeah ये उनका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है. तो यार Hmm. लेट्स कीप अप. अभी मुझे और एक सिचुएशन में क्लैरिफाई करना है लोगों से. People are hyping about this Frankie de Jong to Chelsea. Everywhere I read Frankie de Jong to Chelsea done. Chelsea are close to agreeing a fee with Barca. This that. ठीक है भाई. Of course, Chelsea are close to agreeing a fee with Barca. Man United have already agreed fee with Barcelona 5 weeks ago. तो बारसा Hmm. से फी अग्री करना इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तो हो ही जाएगा. तुम्हारे पास पैसा है हो जाएगा. The main important thing is Barca paying that 17 million to Hmm. Frankie de Jong and agreeing a transfer on and then agreeing a personal terms. तो ये इंपॉर्टेंट है. अगर क्लब से मनी अग्री करना ये बड़ा बात नहीं है. पीपल ऐसे हाइप कर रहे हैं Hmm. कि फ्रैंकी डियंग चेल्सी चला गया. डोंट काउ आई एम नॉट दैट आई एम बिकॉज आई सपोर्ट यूनाइटेड में बोल रहा हूँ. डोंट येट काउंट यूनाइटेड आउट बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिलेशनशिप. सॉरी मैनचेस्टर बॉस का रिलेशनशिप फ्रैंकी डियंग का बहुत अच्छा है. ही वॉज अ प्रीवियस कोच उसका. तो उनका Hmm. रिलेशनशिप अच्छा है. तो ये काउंट मत कीजिए. दिस विल ड्रैग ऑन टिल द डेडलाइन डे आई थिंक. एंड whoever gets him will get a fantastic midfielder. Frankie de Jong remains United's number one transfer priority, and they still believe a deal can be done. Sky Sports said, Dharmesh said, yeah. 10 watching, 4 likes. Guys, like the stream too. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, Venkatesh Bhai, for promoting us. Thank you. Shout out to him. So, Yes. guys, thank you Thank you, Venkatesh. Venkatesh. moving on from Barca and United, again, I want to talk about a United target, but he's not just linked to United, he's linked to 4 or 5 clubs. He's called the next Robin Van Persie, Cody Gakpo, Hmm. who plays for PSV Eindhoven. Interesting player. What I heard is Arsenal had uh, inquired about him few weeks back, and they were really interested in Hmm. signing him. Fantastic winger, can also play as a striker, and he's coached by United legend Ruud van Nistelrooy. Good one, So Mr. Roy. Hmm. as a player, he can play on the left, get in those pockets of spaces, allowing the wing backs to charge in forward, has a wonderful left foot, can cross the ball, and more Hmm. importantly, good at dribbling, physicality अच्छी है, technique अच्छा है, intensity है. तो fantastic player है and one of the top Dutch talents. So 40 million में available है. The only catch to this is wherever he goes, he will only go during the end of the August because Eindhoven only want to sell him once they are confirmed in the Champions League. Now they beat Monaco last night. They are going into Hmm. the next round of the Champions League. They'll be playing Against Rangers. Inter. So two game, home and away game. Once Eindhoven get through that and go into the group stage, then they will be open to selling Cody Gapco. For now, 40 million is the value, which may increase if if he performs well on those games. We never know with this Dutch club. पहले डच प्लेयर बहुत चीप में मिलते थे बट अभी देखो एंटनी 80 million, मार्टिनेज 55 million. आई नो दे नॉट डच प्लेयर्स बट दे प्लेड इन एरेडिवीजे. तो यार Yes. एरेडिवीजे अभी इज नो लॉन्गर cheaper option. You are going to have to pay out to uh, Hmm. buy those players. So क्या Big लगता है boss. how any output have you watched Cody Gakpo, Prashant? No, I have not watched him play. Second thing would be that you mentioned that the Dutch league is no longer a cheap option. Let me tell you, it is no longer a cheap option for Man United. If this was someone like Man City, Arsenal, or even Leicester, they would have actually got this.
quotation of a cheaper amount. Everyone knows that United are desperate. Everyone is going to quote them a higher amount. So this 40 million is actually for United. Maybe if City or Arsenal would have signed them earlier, it would have been for maybe 25 or 30 million at the stretch. सेकेंड थिंग इज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है इतना सब एक्साइटमेंट है अच्छी बात है खुशी की बात है बट इफ इज द लेफ्ट विंगर दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब तो from what I know so far right he is someone who plays on the left he likes to cut in and score and dribble through we have players like Martial and Rashford who play on the left. They are playing off the left. That's our only concern. On the right, okay, मतलब wingers को तो चलो हम switch भी कर सकते हैं, but then if he's purely playing like that, मतलब वो तीनों players ऐसा ना हो कि वो तीनों same type के players हो जाए. And again, he's coming from Correct, correct. Eindhoven. He's highly rated. Uh, and who was the last player who we signed for from PSV Eindhoven and was highly rated? Do you recollect? Agreeing, did you? Defy. Memphis Defy. Depay. Memphis एग्जैक्टली क्या Depay. हुआ Memphis उसका Depay. वो तो अभी भी अवेलेबल है so I'm not sure but see again we are under 10 hours so if that signing works out well and good I would not be against it as such because we still do need wingers Yeah. so yeah let's see if it does happen well and good agree Absolutely, absolutely. And अग्रिम भाई क्या लगता है आपको? Cody कोडी Gakpo, I गैक्पो. think he scored 17 goals last season, right? 17 to like 20 Hmm. goals, I think. Yeah. Because I'm not followed much of like Eredivisie because सबको पता है it's a one-sided league between like PSV or probably Ajax. Nobody sees it. Ajax. But Yeah. but it's a very sounds to be a very good prospect to me. But देखते हैं. EPL is very challenging. Everyone knows, and let's see if he can be the best, probably number 9 for United for probably next decade or something. Let's see. Too early to judge on them. But देखते हैं if this deal goes through. Yeah, too early, Anthony Martial को भी हम बोल रहे थे next Thierry Henry, where has that Hmm. ended? And so Yeah let's Monaco are still let waiting first for him let to sign win the him. Ballon d'Or There's a clause in his contract, if he about wins the Ballon d'Or Ballon d'Or, then United pay a certain amount to Monaco. So I think yeah that it's gone now. Now that he signed a new contract, शायद वो अभी फिलहाल exist नहीं करेगा. But okay. moving on from United, moving on from the incompetence of Manchester United in the transfer window, I would like to talk a lot about United, but हमारे पास समय कम है. Situation at the stadium में जो होने वाला है, the buyout जो होने वाला है. I don't want to talk about that buyout because I don't think it is genuine. You know, that guy tried it in early 2000, failed miserably, and I think early 90s and failed miserably. Yes. I think whoever buys United is going to be a hostile takeover, like he rightly said, because the club is not for sale. So Hmm. now that I have spoken about it, तो थोड़ा बात कर ही लेते हैं. तो he doesn't the experts जो है इस चीज में जो finances रखते हैं and who are the people who help the Chelsea buyout वो कह रहे हैं कि ये likely go through नहीं होगा because of the way it's presented and things around it तो ये unlikely है कि ये होने वाला है but again there is a hope if a billionaire can buy United the problem is it's not just they're buying United they're buying the depth of as well plus the work that has to be done in the stadium, building the stadium, उसमें investment करना है. So it's not just putting in those 5-6 billion, to buy the club, but getting rid of that debt, taking that debt and then putting in investments in terms of stadiums and facilities and infrastructure. At the same time, investing in transfer market. So it's a huge investment. And I'm not sure that how likely it is to go through. But one thing I'm very positive about is the empty stadium in the Liverpool game. That's what fans are calling on. So if that actually happens, there will be a huge setback for the Glazers. And Hmm. I'm not sure how early they will sell. But again, it's the best for us fans that they end up selling the club, but they won't do that because it's a money minting, Yes. club for them. Every year they remove dividends. पैसा आ रहा है बैठे बैठे क्या क्या चाहिए क्या ब्रांड है यूनाइटेड है जब तक आ रहा है तब तक रखेंगे
जिस दिन नाम खराब हो जाएगा, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, बेच देंगे यार, कुछ बिलियन का वापस ले लेंगे. पुअरली रन क्लब, पथेटिक ओनर्स, वर्स्ट ओनर्स, सबसे वर्स्ट ओनर्स यूनाइटेड के हैं. मुझे लगता है वो डार्बी काउंटी का ओनर भी थोड़ा अच्छा है उनसे. हाँ एग्जैक्टली. इनफैक्ट ये यू मेंशन द डेट. एक बात बोलना चाहूंगा कि जब यूनाइटेड को उन लोगों ने खरीदा था तभी हम्म, 600 मिलियन का डेट वो लोगों ने यूनाइटेड पे डाला था. ठीक है. हम्म, फर्स्ट थिंग इज अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा टेक ओवर वो टाइम पे पॉसिबल था. आज के जमाने में वो टेक ओवर ही पॉसिबल नहीं. नीदर इन इंग्लैंड नॉट इवन इन द यूएस. तो अभी वो टेक ओवर के अगेंस्ट भी ऐसे अभी लॉज आ करेक्ट. चुके हैं टू प्रिवेंट सच टेक ओवर. सेकेंड थिंग इज ये जो 600 मिलियन का डेट है अब तक 600 मिलियन ही है. ये लोग ने करेक्ट. पैसा करेक्ट. निकाला है, खुद के पॉकेट भरे हैं, इंटरेस्ट भरा है, बट वो जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो उतना का उतना ही रहा है. इट हैज नॉट इवन चेंज. एंड इमेजिन वो लोग ने ट्रांसफर्स पे भी इतने सारे स्पेंड किए लाइक अबाउट £1 billion, बट दैट डेट इज स्टिल रिमेनिंग द सेम, द प्रिंसिपल इंटरेस्टिंग डेट. फैक्ट है, another तो interesting fact. दैट In जस्ट सेज कि भाई 2012, ओनरशिप कितना बकवास है. हाँ. हाँ प्रशांत बोलो. सॉरी सॉरी हम्म. सॉरी टू इंटरप्ट यू. मैं मैं बोल रहा था कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2012 में या कंटिन्यू. ग्लेजर्स ने यूनाइटेड को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया. तो इफ यू हैड इन्वेस्टेड back हाँ. then in Manchester United, wherein the price was £1,000, right now it would be £814 after 10 years. So look at the situation of the club. It's so bad. It's so pathetic. And we can go on and on about this, but it's That is pointless because, until. sorry. Hmm. Bolo, bolo. Prashant? Prashant was frozen, I think. I think Prashant stuck हो गया. But anyway, ठीक है. uh, ठीक है. हाँ बोलो मुकेश भाई, क्या बोल रहे थे? नहीं मैं वही देख रहा था like if it's a very sad situation coming from United fans, like their owners are unwilling to understand the plight of United fans, which is very wrong in my part. Even having private owners be, it's actually a blessing. Look at Man City, कैसा पैसा उड़ाते हैं यार ये लोग. I mean, ऐसा and बट they ऐसा are भी ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि लाइक यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है, पैसा है बट दे जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड. दैट्स व्हाट माय कंसर्न है. correct, 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 correct. And And it has and not it's been not about spent on the spending correct money, it's about resources as spending well. in the मतलब right way. कैसा है, sorry. हाँ. No, बोलो प्रशांत, क्या हाँ बोल रहे थे? एग्जैक्टली. इट्स लाइक हाँ. सो मतलब वही ना कि अभी कैसा है कि चल 10 साइनिंग्स है, 10 साइनिंग्स का जरूरत है, 10 साइनिंग में से कोई एक बड़ा नाम है. हाँ फैंस को खुश करेगा, जर्सीज बेचेगा, उसको उठा लो. हम्म. अभी ये लोग ये राबियो के साथ क्या हुआ, सीडीएम चाहिए, वो लोग को पता है सीडीएम है, सीडीएम सस्ते में कौन सा है. हाँ ठीक है ये है ना, ये काम चलाओ है, ले लो इसको. ऐसा. हम्म. It's literally like that. They have no vision. They have I mean they don't have anything set up behind the club. ऐसे actually में I don't know if you all watch any or any of our viewers have ever come across Talk Sport. Are you familiar with it? Agree, Yes, Divya? talks good. So Yes. Yeah, yeah, Talks yeah. good. Talk I Sport call पे them I call daily them talk uh, shit. हाँ एग्जैक्टली. इट इज लाइक द ब्रिटिश वर्जन ऑफ ESPN इन माय ओपिनियन. वो लोग भी Yeah. कुछ भी बात करते हैं. तो एक्चुअली में किसी फैन ने उनको कॉल करके बोला कि भाई व्हाट, यूनाइटेड के ग्लेजर्स सारे बकवास है, बेहुदा. तो दे आर लाइक बट व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ओनर्स, दे हैव स्पेंट सो मच. अरे भाई दे हैव स्पेंट बट दे हैव नॉट स्पेंट इट वाइजली. दे डोंट नो व्हाट टू स्पेंड like or Exactly. how to spend it. So that is the problem. Or you mentioned about the stock exchange, Divya. The thing is कि uh, ये Arnautovic का जो था, right? The Arnautovic transfer was stopped simply because uh, only when this thing about him being racist it came under scrutiny, right? उस पे एकदम Yeah. प्रेशर आया तब जाके उन लोगों ने वो बंद किया. बैक ऑफ किया बिकॉज दे न्यू दैट दिस विल एक्चुअली डिस्प्लीज द स्पॉन्सर्स. तो वो लोग हम्म. यूनाइटेड की फैंस की सुन के एक्चुअली में नहीं उसको कैंसिल किया. उन लोगों ने ये कैंसिल किया बिकॉज इट वाज हर्ट द स्पॉन्सर. एंड अगेन मैंने जैसे कल मेंशन किया था, टीम व्यूअर ने भी लाइक ऑल्दो 5 साल बाकी है उस डील में, नहीं कितना 4 साल बाकी है, बट टीम व्यूअर ने अभी से बोल दिया कि वो लोग अपना स्पॉन्सरशिप रिन्यू नहीं करेंगे. So करेंगे. Correct.
that is obviously the lamba sponsorship baki hai, but the statement, I mean the impression it gives is very obvious, right? That वो लोग को भी अभी क्लब में ट्रस्ट नहीं है, and that thing is becoming more and more obvious by the day, you know. So that's where we are heading. So sooner or later, I'm just hoping कि ये pressure उन पे बढ़ जाए, and in the end they have to give up and sell. So yeah, let me also read what Tejas is saying. They are spending club money and have paid 800 million interest on their loans, and they have taken 200 million dividends of, so 1 billion out of the club. Yes. So compare this 1 billion which they have taken out of the club, and at the same time City have invested that back into the club. ये फर्क है दोनों में, and that is very visible on the pitch now. So हाँ तेजस, very correct. सच बात है. Yeah, absolutely. And like I said, we can go on and on about the Glazers and United and what they have done in these 15 years, destroyed the club. Absolutely. And moving on from United, another topic I want to talk about is Chelsea and their ambition in the transfer market. They did sign Koulibaly and Sterling, and then eventually got Kukurea. So Koulibaly was for I think for 40 million, and Sterling for 43 million, and then Kukurea for another 55 million. So around 130 million to spend हो चुके हैं. They're they're Hmm. now going to sign Wesley Fofana from Leicester City for 85 million euros. Fantastic defender. I don't think he's worth 85 million. Zada hai. Leicester have an Hmm. habit of selling their centre backs for that money. We all remember they sold one centre back to us for the same amount of money. Prashant, I hope the memory is still there. And so यार वैसी Fofana, fantastic player. Injury था last season, long injury था, and then he came back. He's got a brilliant future ahead of him. But I think 85 million is still too much. And after spending 85 million, they are also going to sign Frankie de Jong for another 80 million. So that takes their spending to around 290 to 300 million. An Yeah. owner who has Hmm. just bought the club, he wants to. Obama, I don't think will happen because I think again by सही है ना ये कि बारसा Hmm. या तो डिपाई या तो अबोमैन को जाने देंगी दोनों नहीं जाएंगे करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग The thing is like Frankie De Jong ka bhi is, I just read one report from Gerard Romero only because he is somewhat reliable to United fans also, no? So they say he's saying basically there could be a possibility of both of them leaving if Chelsea bid is ओह accepted. ओके ओके दे वांट ओबामयंग एज वेल पोस्ट दोस साइनिंग्स वाह मतलब So, 300 मिलियन hmm. तो स्पेंड कर ही दिया फर्स्ट सीजन में दैट्स हाउ एन एम्बिशियस will look. Now I'm not saying ना सी पॉइंट ये होता है कि तुम जाके स्पेंड मत करो unwisely. Spend wisely. Hmm. Have your scouting people ready. United recruitment is so bad over the years. Players like Alexis Sanchez and Zlatan Ibrahimovic was good, but again he was 37, 35, 36. Edinson Cavani, fantastic player. He gave Again, a good lot of again, but it was not the right kind of signing, and the amount of wages that we gave him was too much. So many signings over the past have been so poor. Mauran Fellaini again not planned. We wanted Fabregas, Gareth Bale, and Ronaldo in that window, and we ended up getting Mauran Fellaini. Hmm. Nemanja Matic, another player who was about to pass his peak, and we signed him. So I think in this duration we signed a couple of only good players, and Herrera, whom we also let Hmm. go on free. So again, Yeah. talking about going back to what Chelsea are doing, they are backing Tuchel completely. The new owner wants to make sure Tuchel is back completely so that he's given the ammunition to succeed in the transfer in the Premier League and the Champions League. Tejas says Chelsea spent 100 million on Kaku and almost 54 million on Werner and still gets back with 300 million transfer budget with the new owner. That's exactly, when you get the right kind of owners who are ambitious and Hmm. who want to win something for the club, this is what happens. And Chelsea ने के owner Todd Boehly का they got lot of stake in the market when Barca took over Kunde and Rafinha उनसे तो but उनको lot of stick मिला but they stuck to the target. They had a recruitment team. They spoke to Tuchel and the signing that they're now making is so fantastic. तो प्रशांत क्या लगता है अभी हम बोल रहे थे चेल्सी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी अभी क्या लगता है तुमको
Okay, will they be in top four? The fourth position is Chelsea or Arsenal. Uh, uh, I think Arsenal is still unlikely. I feel that this season, uh, like my four has been City, Liverpool, and third team would be Spurs, in my opinion, because I think they are doing really well. Uh, Mhm. Arsenal might still make it, मतलब simply because फिलहाल उन लोग का फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा है और चेल्सी का at this point the way things stand as of today वो लोग के पास ढंग का स्ट्राइकर फिलहाल नहीं है ठीक है वो Mhm. प्रॉपर स्ट्राइकर है ओबामेयांग का बात भी इसलिए चालू है ना कि दे नीड अ स्ट्राइकर और ट्यूशल का ओबामेयांग के साथ कनेक्शन है डॉर्टमुंड वाला इसलिए Hmm. उसका बात Correct, correct. Exactly, exactly. Yes. He rates him a lot. Highly rate करता है उसको. highly rated. Exactly. So if he does come in, ठीक है, that might work out. But उसके like I mean मुझे तो वो ओबामा पे भी मेरे को क्वेश्चन है बिकॉज अभी ये एक साल में उसका दूसरा ट्रांसफर होगा जो बंदा आर्सेनल से फ्री में छोड़ के चला गया था और अब वापस से वो आना चाह रहा है तो वैसे टाइप का प्लेयर आई डोंट नो अब भी वो इफ ही विल क्लिक फॉर चेल्सी एंड अगेन चेल्सी Hmm. का कुछ यू नो एक मैजिक का जैसा है कि कोई भी स्ट्राइकर लेके आओ दे डोंट सीम टू वर्क फॉर देम तो वो एक फैक्टर है सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल स्टिल से के आर्सेनल शायद से टॉप फोर में अभी भी रहेगा Hmm. along so we will have like two from London one from Manchester one from Liverpool okay let me read what Sirius says वो बोल रहा है with so many signings there will be a transition period for them so we will see Chelsea doing well maybe post game week 10 but they are contenders for top four for sure. The top three would be City, Pool and Spurs. Yeah, exactly. Top three would be City, Pool and Spurs. आर्सेनल और चेल्सी के बीच में फोर्थ स्पॉट का ये रेस रहेगा यू माइट इवन इन्वॉल्व वेस्ट हैम इनटू दैट they might give it a push the other team as well united will not even be in the race for fourth so these will be the teams that's of course yeah for the fourth spot Fantastic, fantastic. You put really good points there, Prashant, and I'm happy that you bought it. That's very logical thinking. Chelsea have bought players, but like Tejas said, transition will be there, and they still need a proper center forward, which they have been missing for a very long time. Now, before we go quickly, the lineups are out. Let me go through Real Madrid's lineup. As we rightly said, the three of us, it's the same lineup which we discussed, except for one change. Rudiger is not playing. It's a centre back pairing of Alaba and Militao. तो चैंपियंस लीग फाइनल वाला जो है सेंटर बैक पैरिंग है वही है फिल एंड मेंडी स्टार्ट्स एज लेफ्ट बैक कावा राइट बैक और मिडफील्ड तीन तो उनके मैजिकल क्रूज कैसिमीरो एंड मॉड्रिच एंड देन फॉरवर्ड लाइन इज विनिशियस बेंजेमा एंड वाल्वर्दे बेंजेमा इज द कैप्टन तो यार लेट्स सी if Real Madrid can pull off an easy win. I think that Frankfurt के लिए गोड से नहीं खेल रहा है तो सब pretty surprising. I thought he would start, but Mario Götze is on the bench. I hope you guys remember Mario Götze. Bayern Munich, Dortmund. Hmm. कितने क्लब चेंज किया उसने बेचारा. Hmm. in 2014 क्या बोल रहे हो सॉरी Yes. he is a player who scored the winning goal for Germany in 2014 एग्जैक्टली right वर्ल्ड कप में विनिंग गोल उसने ही स्कोर किया था यार बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है अरे मुझे ये समझ रहा नहीं है तुम लोग ने ये प्लेयर को देखा होगा लिल का सेंटर फॉरवर्ड जो है जॉनथन डेविड Hmm. हाँ वो कितना I हाईली रेटेड है मतलब प्रेसिंग क्या उसकी फैंटास्टिक है गोल खेलता है ओवरऑल उसका होल्ड अप प्ले क्या बट नो वन इज गोइंग फॉर हिम सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे ये मार्केट में जहाँ स्ट्राइकर्स की डिमांड है और क्या फैंटास्टिक सेंटर फॉरवर्ड है तो यार मुझे बहुत सरप्राइजिंग है कि उसको कोई नो वन इज गोइंग फॉर हिम 50 मिलियन में अवेलेबल है वो जॉनथन डेविड हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना तो बहुत ही वेरी हाईली रेटेड बट he has not yet maybe because they have not been seen so much in the Champions League मतलब Champions League में अगर एक बार खेल ले maybe people will notice him like हालैंड का भी यही था like, वो एक बार Champions League में आया people started rating him और boom within a season he was in ban and now he's Hmm. at City. एक बार चैंपियंस लीग में आ जाएगा फिर लोग उसको नोटिस करेंगे अरे बट ही इज चैंपियंस लीग वेरी में था भाई वो लिल खेला था चैंपियंस लीग लास्ट ईयर Yes, last season they were champions. लास्ट हाँ सीजन भी था उसके लास्ट सीजन में चैंपियंस थे ना हाँ
यार still. बहुत मतलब सरप्राइजिंग है. बाय द वे, And like he has not shown, मतलब चमका नहीं है वो चैंपियंस लीग में, मतलब ना अभी like he has got the spotlight, ऐसा बोल. Hmm. वो हो जाएगा उसके करेक्ट करेक्ट. बाद ही रिकग्नाइज करेंगे. हाँ, कंटिन्यू. By the way, Arsenal are linked to AC Milan midfielder Sandro Tonali. Very good player. Very good player. Hmm. Hmm. MJ is there. MJ says CR7 be like, wake me up when September ends. क्या क्या डायलॉग है, क्या लाइन है, क्या स्टेटमेंट है एमशे. परफेक्ट सिचुएशन तो बराबर शूट होता है. Frankie de Jong was given two choices, either go to Man United or serve 2 years jail term. Frankie de Jong choose jail time. क्या यार, क्या जेल टाइम. बेचारे को तो पैसे दे रहे नहीं हो तुम, और बेचारे जेल टाइम बोल रहे हो, गाली भी दे रहे हो बेचारे को. Hmm. एमशे says looking forward to see Mbappe, Haaland, Benzema link up play. Oh wait, ये फिर से लास्ट लास्ट स्ट्रीम वाला डायलॉग मारा है फिर से ये. एम्बापे वाला डायलॉग मारा है फिर से. Eric Ten Hag wanted David at Jonathan David at Ajax, but we aren't even linked to him. Yes, surprising because he's an Eric Ten Hag kind of player and he was linked to Ajax. I remember that. तो यार पता नहीं क्यों हम उसके लिए नहीं जा रहे, बिकॉज 50 million है. आई थिंक दैट इज दैट द ऑब्स्टेकल. इफ यूनाइटेड डोंट वांट टू पे 50 million, अगर वो सच बात है तो एक शैम्बॉल है, बिकॉज डार्विन न्यूनेस को 65 million दे रहे थे, तो अभी क्या हुआ, अभी कहाँ गए हो 65 million, यू नो. तो बहुत ही Yes. सैड सिचुएशन है यूनाइटेड की. तो बात ही ना करो, जितनी कम बात करो वही वो अच्छा है. तो हम वेस्ली फोफाना के बारे में बात कर रहे थे, सेंटर बैक फ्रॉम लेस्टर सिटी, who is linked heavily to Chelsea, and I think it's just a matter of time within a week, because पहले 65 million था, फिर 70 million, 80 million, अभी recent bid जो डालने वाले वो 85 million की, which I think Leicester will accept. Only obstacle will be Leicester don't have a time to buy a replacement. तो वो एक obstacle हो सकता है. और Italians, Tejas says Italians are always homesick and they hardly move out of Italy. We were That's true. linked to Tonali at the time, but I remember Solskjaer wanted Tonali. बहुत ही फैंटास्टिक मिडफील्डर है. मैं फीफा खेलता हूँ तो उसको लेता हूँ अपने यूनाइटेड टीम में. उसको बाय करता ही करता हूँ टोनाली को, और फैंटास्टिक खेलता है. तो ओवरऑल भी इन रियल ऑल्सो ही इज वेरी गुड. यंग है, छोटा है बहुत, Hmm. एंड पोटेंशियल बहुत है. बट अगेन तेजस ने बहुत सही पॉइंट उठाया यहाँ पे. इटालियन प्लेयर्स चूज टू स्टे इन इटली देन कमिंग टू इंग्लैंड और अदर कंट्री. इवन दी यूवेंटस का मिडफील्डर, क्या नाम था उसका, मैनुअल लोकाटेली, भी बहुत लिंक था, बट वो Definitely. फिर से यूवेंटस ही गया. बहुत ही Hmm. अच्छा मिडफील्डर है वो. फ्रॉम फेडरेटिव किया हालैंड था. From Haaland to Nunes to Anthony to Frankie de Jong to Rabiot. What a fall from grace. हाँ ले लो मजे, सब मजे ले रहे हैं हमारे, तो तुम भी ले लो. वो वही क्या, बाकी क्या है. अभी कल तो मुझे लगता है ये, अभी वो क्या नाम था वॉटफोर्ड का, इस्माइला शाह, उससे भी लिंक थे. Ismail Sarr. अभी पता नहीं और प्लेयर कितने तो गंदे अच्छा है दिन वो. देखने हमको. नहीं, आर्नाटोविच, प्लेयर तो अच्छा है. रैबियो. प्लेयर तो अच्छा है यार, इस्माइल सार. यार बट इन, मुझे लगता है इन एंड आउट है यार. कितना मतलब होता तो कोई बड़ा क्लब उसके लिए आ जाता. वो कितने तीन नहीं, बट 4 साल nobody से वॉटफोर्ड में ही predicted. है अभी. But nobody predicted Sadio Mane to be a superstar, na, at Liverpool. अरे साडियो The माने same people. साउथहैम्पटन के लिए अच्छा खेलता था यार. But he was आई he was रिमेम्बर just साउथ. okay. But with Klopp he became a monster under Klopp. हाँ, बट ही वाज That's what it ऑलरेडी is. Na? सिस्टम. अग्री. माने Hmm? आया किधर से? No, माने he was from Salzburg. Salzburg. साउथहैम्पटन. नहीं नहीं नहीं. नहीं, before Southampton he was at Salzburg, ना. जर्मनी से आया. आई थिंक रेड बुल क्लब में था वो. हम्म. ऑस्ट्रिया. Austrian. अच्छा ऑस्ट्रिया से, हाँ रेड बुल क्लब में था. तो ऑस्ट्रिया में से, बट वही वो रेडबुल का ही गेम प्ले था ना, तो ही वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट सिस्टम. उसको वो स्टाइल पता था. साउथहैम्पटन में थोड़ा बहुत वही स्टाइल है. उसके बाद में वो लिवरपूल में वेयर ही वाज अगेन बैक इनटू दैट सिस्टम. तो उसको प्रॉब्लम सेम नहीं सेम हुई. सिस्टम. नहीं, I अभी won't वो say that, but he was a same very थे. हाँ. he had his own like finishing उतना उसका खास नहीं था. If you remember at Southampton, he became a very good player under Klopp See, with the those likes of या Firmino and Coutinho back then. obviously they will change, they will progress as per the team around him ना. तो सामने वो भी तो सब देख, उतना एक्सपोजर वगैरह नहीं मिला है. तो Hmm. मानने का तो कुछ था ही नहीं. लाइक आई डोंट नो व्हाई यू आर ब्रिंगिंग दैट अप, बट हाँ,
No, but Like my I'm giving you that similar sort of example, no? Like सिचुएशन people, why I'm saying this? डिएगो Because जोटा का दे Liverpool, सकते हो एग्जांपल डिएगो जोटा नहीं का लिवरपूल का, वुल्स no, में हाँ अच्छा I, था Hmm. So my point is basically, पता है क्या, when Liverpool had bought Sadio Mane for like 32 million, ठीक है, Liverpool fans were screaming, what the hell have we bought? Because the previous season they had bought this guy, what's his name, Benteke, and Benteke was a flop one season ago. Exactly, that was the same situation what United fans are facing right now, and they had no करेक्ट option. करेक्ट पॉइंट है yeah, but तेजस the सेज thing बारसा इज ऑन ग्रेस पीरियड ब्रो पाइप डाउन ये शायद एमशो को बोल रहा हो तेजस I'm checking. एंड Sar moving to Leeds as per reports, so he ain't coming. Yeah, even I read that Ismaila Shah to Leeds is in very high, very बहुत ही close है वो, तो हो सकता है. M check है Nattu Kaka from FC Electronics to Manchester United. Here we go confirm. अरे Tejas बोल रहा Liverpool players are system protected. Best examples are Robertson and Henderson, even TAA to an extent. Yes, basically वो system में वो fit होते हैं, and that's exactly why Klopp bought them. क्योंकि वो जो players लाता है, they're mostly from Germany and Austria, the Red Bull clubs who have already played in that system. तो system को Yeah. suit करते हैं, and they can, ये it's like buying the right player for the right team. ये बहुत important है. A lot of coaches emphasize on this fact that you need to buy the right player. It's not about Hmm. buying a high profile player, but buying the right player which suits your style of play, who is going to be Hmm. able to adapt to your style of play. So that's exactly what Payes is saying. The system protected है, उनका system अच्छे चलता है. Not, but again Sadio Mane, I think Bayern में भी start अच्छा ही लिया उसने. Hmm. Again, but Nagelsmann, same system. He's come from Salzburg, Leipzig, so same type of Like, system. So I think, yeah, he's a bit lucky in that, but again, you can't doubt his class, world class player, fantastic player, yeah. Sadio Mane. Love to watch Hmm. him on his day, can destroy any defenses. तो यार Hmm. guys, मेरे पास तो आज इतना ही है बात करने के लिए. Anything, any transfer updates or any transfer news that you want to share? Tejas, M. you want to discuss anything in the comment section? Let me know. प्रशांत तुझे Shall we कुछ do बोलना है a ट्रांसफर के बारे में? question is ये सब हाँ भी discuss कर लेते हैं ना, if any viewers wants to ask any questions. हाँ भाई गाइस, प्लीज प्लीज. so Tejas, MJ, any question that you would want to discuss with एनी us? क्वेश्चन, तुमको कुछ बात Yes. करना है? बस एमसी भाई थोड़ा बैंटर मत भेजना कुछ अगर क्वेश्चन हो तो भेज अरे बैंटर में ही तो मजा है. Yes. अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा एमशे ने. हु विल बी सैक्ड फर्स्ट? माय मनी इज ऑन लैम्पार्ड. वेल इंटरेस्टिंग है आई डोंट थिंक कि हाँ लैम्पार्ड एक हो सकता है मतलब रेलिगेशन वाले जो नए लैम्पार्ड हो क्लब्स है सकता है. हाँ उसमें लाइटली नहीं लग रहा स्टीव कूपर जो है अपना नॉटिंघम वाला बिकॉज दे लॉस्ट एट द वीक नहीं नहीं पता नहीं 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 हाउ नहीं, इट दे लॉस्ट टू अ वेरी गुड न्यूकासल टीम. दे लॉस्ट टू अ वेरी हाँ गुड न्यूकासल टीम, सो डोंट काउंट देम आउट येट. स्टीव कूपर नहीं है. मुझे लगता है लीड्स का मैनेजर जो है वो एक है, और एवर्टन का लैम्पार्ड, Marco राइट, Silva. राइटली सेड. Marco Silva मार्कोस again. सिल्वा. मार्कोस सिल्वा नहीं यार, अच्छा स्टार्ट दिया यार, जीत गए वो लोग. ऐसा मत बोले यार, बट फुलहम जीत गया मार्कोस Almost जीत सिल्वा. गए थे. हाँ. has to be pointed out agreeing is right so Marco Silva he starts off well और बाद में he fades off like initially वही हुआ था ना फट के साथ he Hmm. did he did really well उसके बाद में Yeah. एवर्टन को साइन हुआ he started well he paid it off तो वो एक सिल्वा Yeah. का रिकॉर्ड तो आई डोंट नो ही माइट बी ऑन द लिस्ट और लीड्स वाला तुमने बोला जैसी मार्श तो आई हैव जैसी आई मार्च. मीन उसके ऊपर भी लोगों को डाउट है बिकॉज मार्श लाइप्जिग में एक्चुअली चला नहीं था he was at RB Leipzig he was the replacement of Nagel सैक सैक हुआ था उसको भी सैक किया. भाई तो वो सैक ही हुआ था एंड Hmm. वही लोग वही बोल रहे द थिंग अगेंस्ट हिम इज ही इज अमेरिकन सो कितना भी वो जर्मन फुटबॉल की he might not be fit for the Premier League as a coach. So Hmm. वैसा he just is saying West Ham's Cornet signing has been made so under the radar nobody is discussing it. Yeah. मैक्सवेल Okay guys. कॉर्नेट. मैक्सवेल Hmm. कॉर्नेट, फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत ही वर्सेटाइल है.
कैन प्ले द विंग बैक, कैन प्ले द विंगर ऑल्सो, अच्छा प्लेयर है। आई थिंक आइवरी कोस्ट का है, and कुछ Yes. 15-16 मिलियन में ही कुछ वेस्ट हैम ने लिया उसको, तो अच्छा प्लेयर है। और विंग बैक भी खेल सकता है थी, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट by Tejas. West Ham have made some really good signing. The strikers Yeah. Kamaka, I think Cornet है, and they also want to sign the PSG wing back. क्या नाम है उसका? Tiho Kreher. Tiho Kreher. I'm not sure whether I'm pronouncing it correctly, but Tilo Kreher जो है, they're about to sign him. So let's see if that happens to. But West Ham again, don't count them out. They are a fantastic team. Tejas का question है, say my money is on Eric Ten Hag, weeks or months. Looking at how we are operating in transfer window, I don't think he will get sacked. मुझे नहीं लगता है इतना साक हो जाएगा, क्योंकि बहुत एक ही सीजन जल्दी सेट नहीं होगा। नहीं हाँ, नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं होगा। बस ऐसा जेरार्ड अ क्वेश्चन। गुड शाउट आउट। एमशेले क्या बोल रहा है? स्टीवन जेरार्ड एट एस्टन विला, he was Could be. he was he has worse record than Neville's Valencia spell, but Gerrard is very good in camera stare down too. हाँ, बहुत वो लाइन पे बहुत चिलम चिली करता है, शो ऑफ बहुत करता है, हम्म, बट आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन था उस जेरार्ड से था रेंजर्स से यहाँ पे आने के बाद, वो हुआ नहीं यार। एस्टन विला हैव बैक्ड हिम लाइक एनीथिंग। उसको क्या yes. साइनिंग दी है उसको, द हम्म, बाबूकर कमारा, फिर किसको, yeah. फिलिप कोटिन्यो, और 2-3 प्लेयर साइन किए उन्होंने। बहुत मतलब बैकिंग तो उसको बहुत जबरदस्त दी है, बट अगेन ही इज नॉट। आई थिंक दे लॉस्ट राइट ओपनिंग डे में, दे लॉस्ट टू 2-1. लीड्स यूनाइटेड राइट। Bournemouth. करेक्ट। तो आई मीन अगेन यू कैन never predict. Marcos Silva is a hipster who will burn his No, team down and his downfall from there. Jesse March will do well than people think. हम्म, Yeah, maybe, Jesse March, positive start मिला लीड्स को, they won their first game. Marcos Silva, यार एवर्टन के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है and didn't work out that well, and बहुत क्रिटिसिज्म भी आए थे उनके स्टाइल से। तो अगेन हम्म, तेजस जो मेरा उसका पॉइंट सही बात है, हो भी सकता है। तेजस का क्वेश्चन है, हु आर योर टॉप 3 फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम? क्वेश्चन फॉर ईच वन ऑफ यू। प्रशांत, टॉप 3 प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। all time. Uh, my first would be Cristiano Ronaldo. Uh, I mean, I have right from the start, like right from his debut, 14 wonders. I still remember that. So that's why Ronaldo will be top. Uh, Apart from that, I would say Del Piero. Alessandro Del Piero is someone I'm a huge fan of. He was also one of the first, like, I started watching football. And the third would be, okay, third, close one. Third will be tricky. Uh, I'll say Leo Messi as per what we have right. Third will be Leo Messi. He's he's asking not your best players you've seen, your favorite players, personal favorite क्या है? तेरे personal favorite तीनों के तीनों, personal Uh, favorite मतलब अलग। ठीक है, ओके ओके, या अग्रिम भाई, your personal favorite team players। Is it from like like all कहीं कभी six कभी, seven एनी generation? थ्री प्लेयर, ठीक एनी है. थ्री प्लेयर Okay. कभी, हाँ। Okay. So my first personal favorite has to be Maradona, because everyone knows, with the ball he was absolutely untouchable in my honest करेक्ट। opinion. And second, I would rate probably Ronaldo from Brazil, because thank you. अरे again, दैट not at club 98 level. वर्ल्ड कप, No, yes, 98 and माँ 2002 का World Cup. टेरर था रोनाल्डो का, टेरर Yes, था। yes, because nobody was like, I mean, like close to his like striking ability. I think probably someone could have come करेक्ट। close to him was Thierry Henry, Uh, possibly. And and third favorite, it's थोड़ा it's between, I think Messi and Ronaldinho, if I have to choose. ओके yeah, ओके Hmm. ओके। Because I keep them, because of, the Barcelona history, because what they had made this club into a winning fortress for the last 20-25 years. So I yeah, and put करेक्ट। both of them. uh, when Ronaldo joined Barca, they were a UEFA Cup club, like Europa यूएफा League. यूरोपा लीग कप, या Yes.
Yeah. So Yeah. that everyone forgets. So, like for Ronaldinho, that this famous goal of his against Chelsea, which I still remember. He literally ओह अरे 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 he just तो कमर हिलाया था उसने सिर्फ ऐसा कमर हिलाया और उसको चिप किया था पीटर चेक हैड नो आइडिया कभी उसने शॉट लिया और कभी वो गोल गया पीटर चेक वाज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस दैट वाज Yes. मतलब मुझे वो गेम मैंने लाइव देखा था like it was amazing. I mean, Insane. despite Ronaldinho's shortcomings, he couldn't last for like long in like club career. हम्म But he was like very हम्म close to like Ronaldo and Messi in Uh, that span. He was the best footballer in the world. करेक्ट करेक्ट But again, this is my top three. What तो about you, मेरा Dipesh? I will not take Cristiano Ronaldo and Lionel Messi's name because सब बोलते हैं तो apart from these two, the three players that from the time I've been watching, number one, my all-time favorite. I've never seen a player as good on the ball, as calm, composed than Zinedine Zidane. मतलब यार Hmm. I am बिग फैन जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया जिनेदिन जिदान जैसा कोई प्लेयर नहीं है नंबर वन Hmm. सेकंड इज ऑफकोर्स रोनाल्डिनियो फैंटास्टिक फुटबॉलर गिफ्टेड बोलते हैं ना मतलब कुछ फुटबॉलर Very good. मतलब वो बॉर्न होते हैं वो गिफ्ट के साथ रोनाल्डिनियो Hmm. हैड दैट काइंड ऑफ गिफ्ट एंड थर्ड इज ऑफकोर्स वेन रूनी watched him play Very good, yeah. from the time United bought him and more than his talent and his achievements, his attitude on the pitch, he started as a center forward, at times Hmm. played as a winger, then played as a number 10, then played as a deeper lying midfielder. He was ready to give it all for the club. And that's why his career couldn't last around 37, 38 years like Cristiano Ronaldo because he gave it all. And my all-time favorite is Wayne Rooney as a Manchester United player. But his top three is Hmm. Zidane, Ronaldinho, and Wayne Rooney. My three players. Uh, More like Eric Ten. Ha ha ha. एमशे बोल रहा है who has the worst legacy पापा बार्थोम्यू और ग्लेजर्स विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन एमशे का आंसर है रोनाल्डिनियो मेसी काका काका मतलब फैंटास्टिक प्लेयर Hmm. एसी Good player. मिलान के लिए जो खेलता था काका वाज फैंटास्टिक शेवचेंको एंड Yeah. क्रेस्पो का तो मतलब मजा था we they just had to receive the ball and score goals it was that fun for them तेजस का है डेविड बैकहम ओके रोनाल्डिनियो और Hmm. सॉरी रोनाल्डो एल फिनोमिनो ऑफ Hmm. कोर्स Aymar Riquelme, Juan Roman Very Riquelme, good very player. underrated player. Very. Honorary mention to Not Rooney, mentioned. Hmm. CR7, Messi, Ronaldinho, Kaká, Shevchenko, Inzaghi, Yeah. Sedor, Davids, Maldini, Nesta. अरे कितने All these. इसका नेडवेड भी लिख देता है पावेल नेडवेड Yeah. एंड तीन बोले थे पीएससी तो 30 नाम दे दिए Right. जेनेटी नहीं बोला भाई ने जेनेटी नहीं बोला बस राबियर Yeah. जेनेटी So, Javier Zanetti भी है. All Serie A players. yes Like So let's come back to MC's question. Who has worse legacy? Papa Bartomeu or Glazer? uh, it's arguable. It's a very good, very debatable question. We can make an episode on that. Who's worse? Oh, I think it's फुटबॉलिंग एस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑफ कोर्स ग्लेजर्स दे आर वर्स्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑफ कोर्स पापा बार्सिलोना बार्थोम्यू क्योंकि बार्थोम्यू ने तो धज्जियां उड़ा दी बार्सिलोना की धज्जियां और एक साल होता तो मुझे लगता है बार्सिलोना एडमिशन चला जाता हम्म this is the thing. टोटली डिस्ट्रॉयड द क्लब yep Asa have managed to stay in the Champions League. They are still, in the running for the La Liga. They have not, they have not fallen from grace to such an extent कि भाई top six तरफ है. United का तो मतलब after as soon as Fergie left, Glazers have been exposed after that. उसके बाद से they have never been the हम्म so एग्जैक्टली Fergie was like papering the cracks, cover कर रहा था and then once he left, once Sir Alex left, it was all exposed and then yep Woodward भी take charge किया तो it हाँ. went downfall होता गया. Mourinho tried to bring us up, and then Solskjaer also to some extent, but then it was never going to work. Long term में वो failure ही था. हम्म Failure के लिए Proper.
So MK saying MC says Lindelof, Lindelof, Maguire and Jones. Jones for Ballon d'Or. This इतने legend. इतने लेजेंडरी फुटबॉलर्स है, 3 कम पड़ेगी. सही बात है भाई, इतने अब पूरा 11 का लेजेंड बनाना ऑन द पड़ेगा मनी. तुम्हें सर. लेजेंडरी एपेक्स इज Lothar Matthäus, Ronaldinho, and Ronaldo Lima. Yeah. Lima. I have not watched Lothar Matthäus play, so I don't know. But what I've read and what I've heard about him, brilliant player. One of the Yes. legendary players. So वैसे तो मैं भी जॉर्ज बेस्ट का नाम ले सकता हूँ, but I have not But- watched him play. I've हाँ But बोलना. you guys must have seen you guys must have seen the final where I think where United had won that 2-1 against Lothar Matthäus, no? मैंने I think it was Lothar, yes, 2-1. चैंपियंस लीग फाइनल. Yes, Camp Nou पे. I think it was Lothar Ah, Matthäus' team. it was, Lothar नहीं, Matthäus नहीं था it was वो? not there. नहीं Real, I think Lothar Matthäus is the only player who hasn't won the Champions League, despite having a beautiful football career. Okay, so not sure about that. Legendary effects can put a light on that. MC says Papa Bartholomew brought down treble-winning Barca with Manchester. Couldn't, says MC. And then best 3 in Prison FC. Prison FC Harry Maguire. फिर वो क्या नाम है उसका, 2 तो यूनाइटेड की है, मेसन ग्रीनवुड. एंड देन वो मैन सिटी का क्या नाम है उसका, मैन सिटी के 2 प्लेयर है, नहीं, एक तो लेफ्ट बैक मेंडी, Benjamin Mendy. और उनका पहले वो था वो बंदा, और एक हाँ बेंजामिन मेंडी, और उसके पहले एक था ना जो चाइल्ड इस पे गया था प्रिजन में, क्या नाम था उसका, Adam Johnson. Andy एडम जॉनसन. हाँ एंडन जॉनसन. हाँ तो ये है. तो यार प्रिजन एफसी प्रसाद का मुंह मीमेबल है, देख कैसा अटक गया है. अटक गया. हाँ अभी सही कर रहे हो, अभी सही कर रहे हो. अरे मिडिल फिंगर दिखा रहा है, देखो बढ़ गया हो. अब फिर से हैंग हो गया उसका, शायद स्ट्रीम हैंग हो गया उसका. रुक उसको आने दे, उसके बाद फिर बाय बोलते हैं लास्ट. यस. और कुछ Trying to किसी को adjust. पॉइंट्स मेंशन करना है, we can probably mention. We have like I think 5 minutes more. We can do it. 5 more minutes. Anything? प्रशांत भाई आपको कुछ एमसी आया, कुछ बोलता है ब्रो, बेंजामिन मेंडी क्राइम किया पर एडवर्ड मेंडी का फोटो छपा. या आई थिंक या somebody made that blunder. किसी ने तो ब्लंडर किया था, वो बेंजामिन मेंडी की जगह पे एडवर्ड मेंडी का फोटो डाल दिया. गॉड, I mean there are so many Mendy, Freeland Mendy, Benjamin Mendy. वो कंफ्यूज हो गया कौन सा वाला, और डाल दिया बेचारे एडवर्ड मेंडी का फोटो, उसको बना दिया क्रिमिनल. ऐसा बहुत हुआ था. प्रशांत चल. इसमें बहुत पहले पता है तुम लोग को, चेल्सी का एक हुआ था जॉन टेरी का. लाइक इंडिया में एक वो सिगरेट की ना कैंसर की, इसमें जॉन टेरी की शक्ल यूज कर रहे थे. I don't know if they are still using it, but वो टाइम पे यूज कर रहे थे. All time favorite goal for you? अग्रिम भाई, all time favorite goal? प्रशांत चला गया. मैराडोना अगेंस्ट इंग्लैंड, 5-6 जन को हैंड ऑफ गॉड. नॉट हैंड ऑफ गॉड, द 5 to 6 players he had dribbled. हाँ करेक्ट. उसने किक ऑफ पे एक गोल मारा था, राइट? वो किक ऑफ से ही वो ड्रिबल करके लेके आता. No, it was like coming from from Argentina's attacking defensive half. Okay. I need to watch that goal after this game. I need to watch that goal. मेसी का जो ये गोल दिखाते ना, like for Barcelona, he cuts like 5 to 6 players and then scores. वो same similar goal है. वो वाला ना, Ankara Messi. मैं वो गोल जितनी बार देखता हूँ, मैं स्पेनिश कमेंट्री में देखता हूँ, वो जो मजा है ना, फील आ रहा है ना वो कमेंट्री का, वो गोल के साथ फैंटास्टिक. जिस तरह से बोला ना, अंकारा मेसी. But that goal is like applaudable. अगर कभी भी कोई ऐसा गोल है, अरे मैन, सुपर. उसने सब कितने गोल मारे, क्यों मालूम है? बायर्न ने चैलेंज किया था, गोलकीपर है नोयर ने, मेसी मेरे सामने गोल मार के दिखाया तो बताऊं. और उसने गोल जो मारा था, उसने ही ड्रिबल द गोलकीपर, उसने गोलकीपर को भी ड्रिबल करके गोल मारा था. माय ऑल टाइम फेवरेट गोल इज
of course, Rooney का overhead kick against City. That's Yes. my all-time favorite goal. So मेरा तो all-time favorite. Tejas John Terry shagged his teammate's wife. Now Chelsea have a dispensable condom for ease access as a moment of tribute to the legend. Wayne Bridge था, right? Wayne Bridge की wife का Wayne उसका Bridge. affair था. Wayne Bridge. Yes. Wayne Bridge was that player. फिर Ryan Giggs का भी आया ना All फिर बाद में. around the हाँ Stamford Bridge. All around Stamford Bridge. या और प्रशांत तेरा और गोल तेजस का क्वेश्चन है ऑल टाइम फेवरेट गोल तेरा मैंने और अग्रिम भाई का मैराडोना वाला गोल है विच ही स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड माइन इज वेन रूनी ओवरहेड किक योर फेवरेट गोल okay, mine is Cristiano Ronaldo's long range free kick against Portsmouth. पोर्ट्समouth So, तो मेरे को तो वो David गोल James था, इनडायरेक्ट David फील James was लगा the मुझे लगा ये नहीं हाँ मारेगा इतना दूर से नहीं मारेगा मारेगा अरे मार दिया था हाँ और डेविड जेम्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेविड जेम्स था और Yes. ये शाका हिस्लॉप भी था, वो ESPN वाला, तो वो दोनों थे तब। But by the way, And they were Portsmouth was both also beaten by on that ये क्या क्या takeover के Portsmouth was also like ये big time takeover के time पे था ना. They were also like competing with the हाँ तब likes of टेक ओवर का Liverpool. सीजन था हाँ Yes. हाँ एग्जैक्टली या सो दैट वुड बी माय फेवरेट गोल। एमशे का मेसी है मेसी वर्सेस लिवरपूल बैकहम Yes, that's वर्सेस also good one. ग्रीस एंड Hmm. अभी हाँ ये नेक्स्ट वाला कमेंट पर मैगवायर फॉर मैन यूनाइटेड नहीं एक्चुअली ही हैड और स्कोर्ड कौन सा व्हेन ही वाज एट और कौन लेस्टर सा लेस्टर के लिए था ना शायद खेला था हाँ तभी उसने कुछ मारा था भी हाँ। तेजस योर फेवरेट गोल तेरा फेवरेट गोल कमेंट्स में डाल कौन सा वाला है व्हाट्स योर फेवरेट गोल वी हैव शेयर आज शेयर एज योर्स एमशे ने बता दिया उसका मेसी अगेंस्ट लिवरपूल बैकहम अगेंस्ट ग्रीस व्हाट्स योर फेवरेट गोल my favorite goal नहीं तेजस 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 अच्छा क्वेश्चन जो तेजस कि तेजस उसने का पूछा था तो हाँ तो उसको भी yes आंसर you करने have दो the right to ask the question as well और एक लास्ट क्वेश्चन किसको पूछना है तो बैकहम वर्सेस ग्रीस इज ऑल टाइम फेवरेट गोल थैंक्स hmm हाँ या yes एक्चुअली बहुत crucial इंपॉर्टेंट goal गोल था yes वो हाँ वो नॉट बहुत जस्ट इम्पोर्टेंट अ गोल था। ब्रिलियंट फ्री किक बहुत इंपॉर्टेंट गोल था इट टुक इंग्लैंड इनटू दैट वर्ल्ड कप अदरवाइज इंग्लैंड वो लास्ट मिनट पे मारा उसने हाँ yes वही बट वही मतलब उसमें वो क्रिटिक्स का यही कहना है कि इट वाज एन इम्पोर्टेंट गोल बट देन वो मैच में तो वो ड्रॉ ही हुआ, सो दैट्स व्हाई लाइक उसके क्रिटिक्स बोलते ड्रॉ हैं ही कि हुआ था वी शुड स्टिल व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग इट सो मच करके। ऑब्वियसली वो लोग क्वालिफाई हो गए वो तो है hmm बहुत बट बड़ी बात थी हाँ हाँ इट वाज लाइक नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ मेसी नॉयर मेसी चिप वाज नॉयर चुप बस हाँ चुम्मेश्वर अरे क्या गोल था वो हाँ, मतलब मैं वो भी मस्त। मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा था उस दिन मतलब आई वाज सपोर्टिंग बायर्न आई वांटेड बायर्न बट ये स्टेटमेंट सब दिया था माइनल ने मुझे लगता है मैं बोला था अरे मारना ही चाहिए था उसने एक नहीं दो गोल मारा था उसने वो गेम में दे वन 2-0 हाँ ये जो पहला वाला जो ड्रिबल क्या क्या मारा था ना रहे मतलब मैं तो hmm बहुत हु विल विन द वर्ल्ड कप हु विल विन द वर्ल्ड कप आई थिंक वर्ल्ड कप विनर आई थिंक स्पेन मेरे को लगता है स्पेन जीतेगा स्पेन प्रशांत तेरे को क्या लगता है मुझे लग आई होप अर्जेंटीना जीत जाए, लाइक दे आर प्लेइंग वेल एंड आई वांट द हम्म यूरोपियन हेजेमनी टू बी ब्रोकन। सो मतलब should काफी be a टाइम South से American क्लब game वर्ल्ड कप में भी सब यूरोप वाले ही जीत रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप भी यूरोप यूरोप है वाले ही जीते जीत रहे हैं। सो यू नो साउथ हम्म अमेरिका वाले को जीतना चाहिए ऑब्वियसली। अफ्रीकन और एशियन टीम्स तो अब तक वो लेवल पे है ही नहीं कि वो लोग जीत सके, वो लोग राउंड ऑफ 16 में खुश रहेंगे, बट अर्जेंटीना शुड विन इट इन माय ओपिनियन। अग्रिम भाई अग्री? आपका मेरे लिए तो इटली भाई इटली वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है क्या बोल रहे हो तू इटली वर्ल्ड कप ही नहीं खेलने वाली ये तो गूगली वो फेंक उसको बेचारे को चिढ़ाया ना क्या नाम है इसका लोरेंजो इंसेग्नी को कॉर्नर पे बोला था ये हाँ वर्ल्ड कप खेल रहा है क्या तू हाँ exactly. But but बट second if you time, ask me Argentina has missed the World Cup. बहुत that's a very big thing for them. मतलब बिग थिंग Italy is like symbolic with the FIFA World Cup. Italy, Germany, Brazil, Argentina yes ये सारे symbolic है. Like ये चार तो रहने ही चाहिए but वैसे टाइप का। मेरे हिसाब से people are really counting out on Uruguay yeah? यूरुग्वे Uh, अच्छा टीम है नहीं but उनका you know अच्छा but why उन टीम I'm लोग का है saying because it डिसेंट is टीम they है still a have little तो they game. वर्ल्ड have they कप have नहीं जीतेंगे वो लोग दे they विल गो टू they क्वार्टर can फाइनल go to सेमीफाइनल हाँ quarter you know हाँ why I'm saying because उनका देख दो सेंटर बैक तो अच्छा ही है उनका
I think they have Araujo at the center back and one more guy. I think Jimenez है ना? Jimenez है. I think Jimenez, Jimenez है Jimenez. And आगे इनका midfield पे they have Valverde and बाकी Valverde है front three they have Suarez, Nunez and Cavani still. Cavani correct yeah, exactly. But front three में यही है कि Cavani और Suarez का like they are both on the wrong side of 30. So Yes, and that's the Cavani तो issue. he is very injury prone. So इसलिए that is one drawback मेरे हिसाब से. Like अर्जेंटीना का भी है कि they are playing very good football of late. Like Yes. बहुत तोड़ फुटबॉल खेल रहा है. And अगर अर्जेंटीना तोड़ फुटबॉल खेलता है, that will also work against European teams because majority उनके players वैसे भी यूरोप में खेलता है. Majority क्या almost सारे if I'm not wrong. So इसलिए so that's why आज अगर out of Europe कोई भी अगर जीत सकता है that should be Argentina. And Brazil also, all-time favorite Brazil. Brazil is very हाँ. balanced at the back, midfield and correct the back. सब पूरा उनका टीम बहुत जबरदस्त है They are very तेजस से gifted. स्पेन फ्रांस जर्मनी अर्जेंटीना फेवरेट्स या फेवरेट्स Agree. ठीक है. तेजस का लास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं ठीक है पहले एक मैं हमेशा कमेंट पढ़ लेता हूँ इट्स कमिंग होम इट्स कमिंग कम इंग्लैंड Maybe in one somebody's outside home, the box one outside the box two Boateng drop and Neuer chip he's talking about the Messi goals against Bayern Munich Bayern. Okay. ब्रो यूरोप वाले जीत रहे fact or not United never had best right back since 2000 always lacked there I mean Gary Neville was good Rafael was okay and then who was it Antonio Valencia makeshift right back and then उसके बाद कौन था Yapstan. right back यूनाइटेड का Yap- हाँ यापस्टाइन वो सेंटर बैक भाई सेंटर बैक था Evra था. Evra was a right back. एवरा वाज लेफ्ट बैक एवरा लेफ्ट बैक था राइट बैक कोई था ही नहीं पहले था गैरी नेवल था उसके बाद राफेल एंटोनियो वैलेंसा मेकशिफ्ट राइट बैक फिर एरन वैन बिसाका एंड डिएगो डालो तो मतलब पॉइंट उसकी सही We है had लेजेंडरी एपिक्स की हाँ yeah वो भी था क्या? exactly. Hargreaves used to play at क्या? CDM खेलता था क्या? Hargreaves. कौन? Owen Hargreaves. हाँ Hargreaves was a और आगे CDM. CDM he could play there but he's more of a CDM तो तेजस का ओके लेजेंडरी एपिक्स का आंसर पढ़ते गैरी वाज नॉट द बेस्ट हैड अ गुड टीम अराउंड हिम टू सपोर्ट हिज मिस्टेक यस डिफेंसिवली ही वाज बहुत मिस्टेक करता था गैरी नेवल वो हाइड जाती थी जस्ट सेम वे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड कैसे करता है वैसे ही उसकी मिस्टेक हाइड जाती थी अगेन तेजस जो बोल रहा है डेनिस अर्विन कुड प्ले एट राइट एंड लेफ्ट एंड रॉनी जॉनसन और या कुड प्ले में तो लाइक सेड एंटोनियो वैलेंसा भी था ही वाज प्रीटी डिसेंट देयर यू नो गिव इट ऑल बट अगेन टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास राइट बैक यूनाइटेड नेवर हैड तो लेजेंडरी एपिक्स का पॉइंट एब्सोल्युटली सही है तो लेट्स गो टू तेजस क्वेश्चन जो है बिगेस्ट राइवलरी इन फुटबॉल नॉट इन टर्म्स ऑफ क्लब ओके सो इज टॉकिंग नथिंग अबाउट इंटरनेशनल फुटबॉल में बेस्ट बिगेस्ट राइवलरी क्या है अकॉर्डिंग टू यू I think I guess England Argentina is one of them. England Argentina is Yes. I think Argentina Brazil. Argentina Yes, Brazil Argentina, yeah Brazil. correct Brazil England अरे I Germany can भी ask है them. England Germany England भी Germany है. England seen France good है. matches Germany and Netherlands भी है by the way. हाँ Germany and Netherlands is also big. Yeah. not in international football as well so भाई कौन सा फुटबॉल बोल रहा है? managers and players okay managers and players I think managers and अच्छा. players में मैनेजर्स में पहले तो जोजे और पेप का बहुत था बट आई थिंक नाउ इट वुड बी लाइक अरे भाई जोजे एंड वेंगर हाँ अरे फर्गी एंड वेंगर भाई फर्गी एंड वेंगर No, but Fergie and Wenger में वो mutual respect भी था. They had that mutual respect for each other. हाँ Wenger और जोसे में तो literally, you know, I remember उसको धक्का भी आता है. Wenger आके try to push him. एग्जैक्टली आई थिंक कॉन्टे का भी किसी के साथ हुआ था ना क्लब के साथ हुआ था झगड़ा मोरिनियो Conte and Mourinho था. नहीं ऐसा फिजिकल जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ था वो मोरिनियो के साथ हुआ था क्लब का No, I don't remember. नहीं कॉन्टे का किसी के साथ तो हुआ था लाइक इट बिकेम फिजिकल ग्रेट टीम अनलाइक वर्बल तो इसके साथ ही होता मोरिनियो के साथ ही होता वर्बल हां
क्या बोला? एमसी Done बोल with रहा है क्या? ग्रेट स्ट्रीम अनलाइक यूनाइटेड समर ट्रांसफर विंडो। अरे हाँ, बोला ना, मजाक थैंक यू FC उड़ा on लो fire. मजाक हमारी। भाई भाई, ये दिन ही ऐसे है, क्या करेंगे। ठीक है, आई थिंक वी आर हाँ, डन विद क्वेश्चंस या। Yes, yes, we are most done of with them. questions and it was fantastic. Thank you guys. Thank you everyone who was on the stream, your comments section and जो questions पूछे आपने, मजा आ गया। MJ says specialist in failure, he could have died. I prefer not to speak. All in want is a regular day in Barclays Premier League golden line. ये समझा नहीं अच्छा, भाई वो क्या अलग अलग सब ये बोल रहे Oh, ही कुड हैव Arsene डाइड, Wenger. फर्गी का हो। लाइन था। हाँ ये आई प्रेफर आई थिंक नॉट आई टू थिंक स्पीक। वेंगर। हाँ, ऑल आई वांट इज रेगुलर डे इन बाकी प्रीमियर लीग गोल्डन। अरे भाई सच्ची में गोल्डन लाइन था वो। आई थिंक इट वाज मोरिनियो हाँ फॉर वेंगर व्हेन ही सेड दैट Hmm. हाँ आई प्रेफर नॉट टू स्पीक। हाँ, Hmm. एग्जैक्टली, इट वाज मोरिनियो। वो चेल्सी एकदम डिक्लाइन होगा ना, तभी सैक होने से पहले। ठीक है। गाइस, हु आर योर प्लेयर्स इन, चलो इसका लास्ट आंसर कर लेते हैं। हु आर योर प्लेयर्स इन फैंटेसी फुटबॉल फॉर सैटरडे? मेरे आई एम इसमें नॉट। कौन है? आई हैव टू सी माय Nikhil, I tell me, have to bhai. see my team. I think I have Kane. I have Nunes. I have Fernandez. Sancho है मेरे पास। सेंटर बैक में कुलीबाली है एंड आई थिंक अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, वैन डाइक है। लेफ्ट बैक में हु इज लेफ्ट बैक? आई डोंट रिमेम्बर। गोलकीपर मेरा मार्टिनेज है। मिडफील्ड में आई हैव कौन है मिडफील्ड में? तियागो, आई थिंक तियागो इंजर्ड हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर, मैंने चेंज किया, आई हैव टू चेंज इट। एंड हालैंड कैप्टन फॉर मी, माय कैप्टन इज केन, हैरी केन मेरा कैप्टन है। एंड चलो फिर सायोनारा, रैबियो, रैबियो अमरावती का कोट। आई थिंक रैबियो विल बी अनाउंस्ड एनी टाइम। थैंक यू एमशे भाई, आपके योर बैंटर, वी लव इट। थैंक यू फॉर Yes. ऑल द कमेंट्स एंड तेजस और एमशे दो और टू always there on the stream. Thank you both of you. And I think we'll end the stream. Prashant is already gone. उसको नो, आई एम हियर, माय नींद आ कैमरा रही इज है ऑफ। शायद बहुत। अच्छा, camera is off. Okay, Prashant is here. हाँ So guys, thank you very much. We'll end the show here. We'll be back on Saturday for the Premier League preview and pictures. We'll do some other topic. 10:30 same time. This is our peak time. We love to do live on this time. तो नेट का गेम भी है वो टाइम पे, तो शायद हम वॉच लॉन्ग भी कर लेंगे, मजा आएगा। यू गाइस Yeah. शुड मेक अ वीकेंड फैंटेसी फुटबॉल पोस्ट on Monday. Thank you, Legendary Apex. We'll think about it. We'll surely try to implement that on next coming Monday if we can gather some more information. Thank you very much. Ramsdale, Alexander Arnold, Cancelo, James, Trippier, Salah, Martinelli, Neto, Bai, Jesus in my team. Good team, good team. मेरा भी I have Reece James. I remember आ गए। Reece James as wing back. Okay, guys. Thank you very much. We'll see you on Saturday. Make sure to subscribe to our channel, smash a like on the video, and good night. Take care of yourself. Bye. Take care. Good night. बाय एवरीवन।